हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक पोस्टग्रेस डेटाबेस जो डॉकर कंटेनर में रनिंग है, उसको एक PGAdmin टूल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। PGAdmin टूल जस्ट लाइक एक UI बेस्ड टूल है, जैसे हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है टिपिकली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर कनेक्टिंग विद SQL सर्वर। इसी तरह से PGAdmin एक open source tool है that has been developed to connect to the Postgres. It's an official tool and Postgres चाहे आप full fledged version रन कर रहे हैं या Docker के थ्रू चला रहे हैं या remote के थ्रू Postgres database instance चला रहे हैं, PGAdmin could be used to connect that. So guys, let's not waste time on this. We know what we are trying to do. Let's get started with the video. सो फ्रेंड्स, डॉकर पे पोस्टग्रेस रन करने के लिए और देन PGAdmin को डॉकर कंटेनर इमेज के साथ कनेक्ट करने के लिए देर आर कपल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो वी नीड टू हैव द डॉकर रनिंग अराउंड, राइट। सो डॉकर डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है विच इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़ एंड विच इज़ अवेलेबल फॉर Mac also, and this application is free by default. You could use it for personal use. So अगर आपको नहीं पता है कि डॉकर डेस्कटॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मेरे डॉकर डेस्कटॉप जो डॉकर की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बोथ वीडियोस लोड किए हुए हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ एंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑन दी मैक ऑल्सो। ये डॉकर डेस्कटॉप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड, the first thing is, because we need to connect the PGAdmin to a Postgres database running in a Docker. So सबसे पहले, जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी कोई कंटेनर नहीं चल रहा है और अगर मैं इमेजेस देखूँ तो कोई इमेज नहीं है, तो कंटेनर रन करने के लिए what I can do is I can open up my terminal window and I could actually use a command to run that for Docker. So if I just write Docker, you would see exactly Docker is installed, Docker desktop is installed, and I could run any command with the help of these options available. But what I'm gonna do is I'm gonna actually run a container for the Postgres database by using the docker run command, and this docker run command would run a container for us. So let's use that. So I'm gonna use docker run, and I'm gonna pass the name of the container as Postgres and -docker. The port number is, let's say, 5432. Now 5432 is by default the port number for Postgres database, which it uses for connection purposes. And why I'm giving both within a colon, because one is for the host and one is for the actual Docker container. So from the host, when it receives any connection onto the 5432, it actually passes on to 5432. So that's how it actually kind of maps that port and passes on the connection request to the actual Docker container. So I'm just gonna keep that one, and then I have to specify the Postgres Postgres, and then yes, the password for the super user, right? So I'm just gonna specify Rohit Thand, let's say, and I'll specify exclamation, right? So this is a very common password. That's not a very good practice, but this is only for demonstration purpose, so I'm just gonna continue with that. So this is where I'm specifying the password for the super user, Postgres password. This is the password, and this password we are going to use once we connect the Docker container with the PGAdmin. उसके साथ जब हम connect करेंगे, and we'll use it. And then finally we are going to use the Postgres latest image from the local. अगर ये पहले local पे check करेगा, अगर हमारे पास image नहीं है locally Docker repository में, then it is going to fetch it from the Docker hub repository. So I'll press enter. So अगर आप देखें, so इसमें ये specify कर रहा है कि unable to find the image locally, which is definitely fine because I don't have that image, so it is not able to find it. And then what it does, it actually starts pulling that image from the Docker Hub repository, or then it actually starts download all the new image, and then it creates a new container for that. So now if you see within the Docker desktop, so हमारा एक Postgres नाम जो हमने नाम रखा था Postgres_Docker, which is exactly the same that we kept it over here. So ये एक हमारी container that is which is running,
और अगर हम इमेजेस में जाएं तो हमारी एक इमेज भी लेटेस्ट जो हमने पुल अप की थी, सो विच इज़ ऑल गुड, लुक्स गुड टू अस। नाउ अब हमारा डॉकर पोस्टग्रेस का जो कंटेनर है दैट इज़ रनिंग, इट इज़ रनिंग ऑन 5432 विच इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें PGAdmin चाहिए। नाउ PGAdmin अगर मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल किया हुआ है। PGAdmin को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन इंस्टॉल इट, इट्स नॉट a big deal to install PGAdmin. So I'm just gonna use PGAdmin and I'll just invoke this. जब मैं इसको इन्वोक करता हूँ तो सबसे पहले बिकॉज अगर आपका कोई कनेक्शन बना हुआ है तो यहाँ पे एक सर्वर रजिस्टर्ड होगा, लेकिन मेरा कोई सर्वर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज क्लिक राइट माउस बटन एंड देन सेलेक्ट रजिस्टर। सो वंस यू क्लिक ऑन द सर्वर, सो आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसका नाम सेम ही रखता हूँ, पोस्टग्रेस डॉकर विच इज़ द नेम, एंड देन यू वांट टू क्रिएट अ सर्वर ग्रुप या कुछ और। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको सर्वर्स में रखता हूँ। कनेक्शन पैरामीटर्स में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको पोस्टग्रेस डॉकर, that is the name of the running container, and this is the port which is 5432, and then of course you have a maintenance database, you have a username. Now by default there is a super user called as Postgres which is automatically there, और मैं इसको use करता हूँ password Rohit Dhand, so let's say ROHITDHAND and then exclamation mark. And then if you want to save the password, you could save that, but that's fundamentally you want to create the connection. So you just want to click save and unable to connect to the server. Okay, let's just change the name of the, I'll just specify localhost. So if I specify save, yes. So if you see this, it is connected and there are some databases. By default Postgres database एक by default database बनता है, जैसे kind of a master database around there. But if you want to create your own databases, let's say I want to create my own database, you want to keep this test db, something like that. There are other parameters you could specify, but I'm just gonna keep it normal, just like, and the owner is the Postgres user. So save it. And yes, you would have another test database which is being created and it all looks good. So this is how you could actually then start creating you have your schemas, you have public schema, you have tables. By default there are no tables, but you could start creating those tables. So I hope guys this is one of the easiest way by which PGAdmin को एक डॉकर कंटेनर जो कि पोस्टग्रेस का डॉकर कंटेनर चल रहा है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कनेक्टिंग टू अ डॉकर कंटेनर, रादर यू कुड कनेक्ट इट टू अ पोस्टग्रेस एक्चुअल डेटाबेस रनिंग ऑन अ remote server, on your local server, depending upon anything, right? So thank you guys for watching this video. I'll be coming back with more videos, so please stay tuned and please do subscribe to my channel.